Good morning, students. Now, today we'll discuss the next topic of the unit, electric force and electric charge. In the last lecture, what we have discussed, we discussed about the electric charge and the properties of electric charge, and we discussed the methods of charging. Now, today, first we'll start the methods of charging in a detailing form. So, as we discussed in the last class, three methods of charging are there. First method is charging by friction or charging by rubbing. Second, that charging by touch. This is also known as conduction. And third method is charging without touch. That method is known as induction. So these are the three methods of charging. Now first, the charging by friction or charging by the rubbing, that is one of the oldest or simplest method of charging. In this method, when you rub the two objects with each other, what will happen? The object which has loosely bound electrons lose their electrons, and that electrons is gained by another object. Now the body with loose electrons make itself positive, and the system or body which gains the electron make itself negative. Means दो ऑब्जेक्ट्स को आप जब रब करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, ठीक है, उसके सिस्टम में न्यूक्लियस से उनकी जो बाइंडिंग है वो लूज है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. सपोज इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, इफ यू रब द ग्लास रॉड with the silk cloth, then the glass rod acquire a positive charge and silk cloth becomes negative charge. When you move your cock in dry hair में आप cock को move करेंगे, rub करेंगे, तो what will happen? The dry hair becomes positively charged and cock becomes negatively charged. Similarly, if you take one more pair, if you rub ebonite rod or rubber rod with fur, then fur becomes positively charged and the rubber rod or ebonite rod becomes negatively charged. So if I am taking a certain pairs, which rub with each other, if I am taking first pair is a glass rod and silk, then glass rod becomes positively charged and the silk cloth becomes negatively charged. Second, if I am taking dry hair and cock, then dry hair becomes positively charged and cock becomes negatively charged. Third, if I am taking fur and ebonite or rubber, then fur becomes positively charged and ebonite rod or rubber becomes negatively charged. So when you rub the two objects, one object becomes positively charged by losing the electron, and another body gains negative charge by gaining the electrons. That is the oldest method of charging. Now next method of charging is charging by touch or charging by conduction. This method is basically used for charging the metals. Charging by touch or charging, which is also known as conduction.
This method is basically used for charging the metals. In this method, first we take a positively charged metal plate and that positively charged metal plate is placed nearby to the uncharged metal plate. And when the plate is uncharged, then what will happen? As you know that a neutral system consists of positive and negative charges in an equal amount. Then all the negative charge of this uncharged plate, this is an uncharged plate and this is positively charged plate. Now this positive charge of this plate attract the negative charge of this uncharged plate and neutralize all the negative charge of this uncharged plate. All the negative charge of this uncharged plate neutralized by positive charge of this charged plate. All these negative charge neutralized by the positive charge of charged metal plate. Now this uncharged plate also becomes positive charge. So in the second method, that is method of charging by touch, then this uncharged body acquire the same charge as the charged body है. यहाँ charged body के पास कौन सा चार्ज था? इस ये मेटल प्लेट जो थी वो पॉजिटिव चार्ज थी. जैसे इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को हमने इस अनचार्ज मेटल प्लेट के नियर बाय प्लेस किया, then uncharged plate is also becomes positively charged. So same charge will be appear on the uncharged system. So that is a method of charging by touch, also known as conduction. Now third method, that is charging without touch, or it is also known as induction. In this method, an uncharged system is placed nearby to the charged system, not touch with the charged system. मतलब एक uncharged, we are taking an uncharged sphere which consists of equal amount of positive and negative charges that placed on an insulating stand. And this uncharged sphere placed nearby to the charged system. Suppose if I am taking a charged system is a positively charged rod. A positively charged rod is placed nearby to this uncharged sphere. Now what will happen? Now positive charge of this rod attract the negative charge of this uncharged sphere and repel the positive charge of the sphere. So negative charge of the system accumulate at one side, positive charge of the system accumulate on another side. So what will happen? अब यहाँ क्या होगा? सारे नेगेटिव चार्जेस जो होंगे एक तरफ यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? एक तरफ रिपेल करेगा. तो पॉजिटिव चार्ज सारे एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक तरफ कलेक्ट होगा. Now as we earth this uncharged sphere, now what is the meaning of earthing? Make the potential of the system zero. Whenever we connect a system to the earth, our earth is a sea of electrons, means uncountable number of electrons are present in the earth. We can easily taking the electron from the earth. As we grab the electrons from the earth, it doesn't change its potential. As you transfer few number of electron to the earth, then it doesn't change its potential. मतलब our earth is a sea of electron. आप समुद्र में से sea में से one bucket water आप ऐड करते हैं या one bucket water क्या करना है? एक्सट्रैक्ट आउट कर ले, उसके वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आता है. सिमिलरली इस
अर्थ में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करें या उसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्रैब कर लें, उसके पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल बिकम्स जीरो. सो व्हेन वी connect this uncharged sphere to the earth, some electrons are exit out from the earth and neutralize all these positive charges. कुछ इलेक्ट्रॉन्स अर्थिंग वायर के थ्रू स्फीयर में ट्रांसफर होंगे और इस सारे पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. नाउ दिस स्फीयर ओनली कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो एंड दैट नेगेटिव चार्ज now equally distribute in whole sphere and it becomes negatively charged. So this uncharged sphere acquire opposite charge of the charged system. Charge system पर जो चार्ज था उसका opposite charge इस uncharged sphere ने क्या कर लिया, acquire कर लिया. So that is the third method of charging, which is known as induction or charging without touch. Is that clear? So these are the three methods of charging: charging by friction, charging without touch, charging with touch, conduction, induction and friction. Now suppose if I am taking one example related to the method of charging, suppose if we rub a glass rod with the silk and suppose that glass rod acquire a negative charge of 3.2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Suppose आपने क्या किया, you are taking a glass rod and a silk cloth and rub with each other, and suppose glass rod acquire a charge of positive charge of 3.2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Then calculate how many electrons transfer in this process. कि ग्लास रॉड पर ये पॉजिटिव चार्ज जो एक्वायर हुआ, उस पॉजिटिव चार्ज में ग्लास रॉड ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय द ग्लास रॉड टू एक्वायर दिस positive charge? Now as we discussed about the properties of an electric charge, that electric charge is quantized. The net charge present on the system is integral multiple of charge present on one electron, that is Q is equals to Ne. Now the total charge of the system is 3.2 into 10 to the power minus 6, that is equals to N into E. So number of electron is 3.2 into 10 to the power minus 6 upon E, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is the charge present on an electron. So this is 2. So N is equals to 2 into 10 to the power plus 19 minus 6. So N is 2 into 10 to the power 13 electrons. So that much of electrons is transferred in this process. So that is called a method of charging by the transformation of electron. Is that clear? Now next topic of this unit is a device which is used to detect the type of charge acquired by the uncharged system when you charge by any of the three methods. यानी आपके पास तीन मेथड है, मेथड ऑफ चार्जिंग के तीन मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन. तो इन तीनों मेथड से बॉडी पर जो भी चार्ज एक्वायर हुआ, अनचार्ज सिस्टम जो भी चार्ज एक्वायर कर रहा है, उस चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कि दैट अनचार्ज बॉडी एक्वायर विच काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हाउ मच चार्ज इट इज एक्वायर्ड. तो अमाउंट ऑफ चार्ज और टाइप ऑफ चार्ज डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस है which is known as gold leaf electroscope. This device is used to detect the type of charge and the amount of charge. Now the construction of this gold leaf electroscope, it consists of a glass cabin. ये आपका पूरा एक glass cabin बना हुआ है, ठीक है, एक cubicle shape में glass cabin है.
इस ग्लास कैबिन के अपर पैनल में एक मेटल रॉड इंसर्ट किया हुआ है. दिस मेटल रॉड इज मेड अप फ्रॉम कॉपर और ब्रास. वन एंड ऑफ दिस मेटल रॉड is connected with the metal knob. ये metallic sphere है which is also made up from copper or brass. The metal knob है. And another end of this metal rod is connected with two gold leaf. ये दो gold leaf है जिससे वो connected है. That's why this device is named as gold leaf electroscope. Now to fit this glass rod vertically in this glass panel, a rubber cork is used to fit the metal rod in the panel vertically. Initially, this gold leaves of this electroscope are neutral, ठीक है, and they are far apart by a small amount. इस तरीके से वो क्या है, aligned है, जिसे आपको फिगर में दिख रहा है. अब टाइप ऑफ चार्ज डिटेक्ट करने के लिए हम कैसे वर्कआउट करता है ये सिस्टम. जिस भी बॉडी का आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, that body is touched with the metal knob of this gold leaf electroscope. So whatever the type of charge is contained by this system or the charge body is transferred to the metal knob through the process of conduction. Conduction में क्या होता है, दो सिस्टम जब एक दूसरे को टच करते हैं, एक चार्ज होता है, एक अनचार्ज होता है, तो अनचार्ज सिस्टम वही चार्ज एक्वायर कर लेता है जो चार्ज सिस्टम के पास होता है. तो ये जो रॉड, लेट्स सपोज कि ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अनचार्ज मेटल नॉब पर. ये मेटल नॉब भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. नाउ दिस मेटल रॉड ट्रांसफर देयर, मेटल नॉब ट्रांसफर देयर पॉजिटिव चार्ज टू दिस मेटल रॉड अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, एंड दैट मेटल रॉड इज कनेक्टेड विद द गोल्ड लीफ. तो बोथ द गोल्ड लीफ also acquire a same positive charge. After acquiring the same positive charge, now the similar charges repel each other, as we know that. So these both the gold leaves increases their diversion. So that increment in a diversion of the gold leaf indicate that the repulsion is exists between these two gold leaf, and the same type of charge is acquired by these gold leaf. तो हम amount of diversions calculate करके क्या कैलकुलेट करेंगे, that how much charge is acquired by this gold leaf. तो अमाउंट ऑफ चार्ज एक तो डिटेक्ट हुआ, और दूसरा क्या डिटेक्ट हुआ, टाइप, अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टाइप ऑफ चार्ज. बिकॉज हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस भी किया था that kind of charge present over the body is tested by repulsion only. किसी भी बॉडी पर चार्ज का टाइप पता करना है तो रिपल्शन से ही टेस्ट होगा, क्योंकि अट्रैक्शन में भी प्रेजेंट ऑन द टू oppositely charged system or one charged system and one uncharged system. तो attraction से type of charge का detection नहीं होगा, repulsion से ही हम type of charge का detection करें. So that is a device which is used to detect the type of charge acquired by a body. That is known as gold leaf electroscope. That is clear. Now we discuss next topic, that is a comparison between mass and charge. Comparison between mass and charge. Now as you know that what is mass, the quantity of matter present in the body is called mass. Quantity of matter present in the body is called its mass. The charges, it is inherent properties of fundamental particle wherever they exist, and it represent either excess of electron or deficiency of electron. Represent excess of electron or deficiency of electron. So that is basically a definition of these two physical quantity, mass and charge. Now basically we are interested a comparison. What is the difference between mass and charge? So as you discussed, the gravitational pull of force, gravitational force between the material objects. So mass is responsible for gravitational force. It is responsible for gravitational force.
and as we also know that which is always attractive in nature. कैसा है? Attractive in nature. So mass is responsible for gravitational force, whereas charge is responsible for electrostatic force. Means it is responsible for force of repulsion between the similar charges and force of attraction between opposite charges. दो charges similar होंगे तो उनके बीच में repulsion होगा, दोनों charges opposite होंगे तो उनके बीच में attraction होगा. तो electrostatic force के लिए कौन responsible है? Charge. और that electrostatic force is attractive as well as repulsive in nature. Attractive भी होता है और repulsive भी. Is that clear? Now second point about the charge and mass, that it is always positive. And as you know the type of charges, there are two kinds of charges. चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव. मास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के रहेगा. नेक्स्ट, मास इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंजर्व. कंजर्व नहीं होता है. देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम डिस्कस करते हैं. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. बट वहां जो लॉजिक होता है वो क्या होता है कि वो जो सिस्टम रहता है या पार्टिकल्स जो रहते हैं, दे आर आइदर स्टैटिक्स और ट्रैवल विद स्मॉलर नेग्लिजिबल वेलोसिटीज. जब भी सिस्टम में पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मास आपका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. सो कंजर्वेशन जो है वो मास के लिए जनरली नहीं फॉलो होता है जब पार्टिकल्स एक हायर वेलोसिटीज के साथ ट्रैवल करते हैं. जबकि चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व. ठीक है. फिर हमने एक प्रॉपर्टीज चार्ज के लिए डिस्कस करी थी, दैट चार्ज इज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट का मतलब क्या है? इट नेवर डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनिशियल फ्रेम हो या नॉन इनिशियल फ्रेम हो, चार्ज की वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है. जबकि मास क्या होता है? मास इज वेरिएंट. मतलब मास जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटीज बढ़ने के साथ मास इंक्रीज होता है, तो इट इज डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनिशियल और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मास की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? डिफरेंट. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज. Is that clear? Now next topic, that is one of the one also smaller topic of this unit, that is conductor and insulators. Now that is basically classifications of material on the basis of their electrical properties. Electrical properties के basis पे हम मटेरियल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. नाउ एज यू नो दैट कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी और करंट टू पास थ्रू देम. जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं. Doesn't allow the electricity, those substances which doesn't allow the electricity to pass through them are called insulators. जैसे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? Metals are conductors. Acid, base, salts, they are also conductor. They are good conductor of electricity. But जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया,
they are bad conductor of electricity. Now कंडक्टर को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएंगे, मेटालिक कंडक्टर्स एंड आयनिक कंडक्टर्स. नाउ व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर्स? जो नॉर्मली हम जो कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, टंगस्टन वायर है, ये मेटालिक कंडक्टर्स है. दे शोइंग देयर कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हम कॉपर वायर को यूज करते हैं, एल्यूमिनियम वायर को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या हुए आपके मेटालिक कंडक्टर्स को. ठीक है. Whereas आयनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? आयनिक कंडक्टर्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स. आयनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, which are basically aqueous solution of acid, base or salts, which are ionic